Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए सो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द second batch of the live class of the Revit MEP. Let's start this today's session. Let's begin with the joy and ride. Okay, so let me share you my presentation. Okay, so everybody can see my presentation easily. Is it visible, right? Okay, so today's session is going to be about a presentation overview regarding to the Revit MEP and the software and all that stuff. So, let's discuss the agenda, today's agenda currently कि आज का जो agenda है, what is the main motive of this session? That is to know about the software first, because all of you are from different fields and some of you are from mechanical and completely आप लोग सॉफ्टवेयर से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होंगे. So we are going to discuss about this thing first, and then we will talk about the BIM and its importance into the AEC industry. That will be the second part. Third, we will discuss about the subparts of the Revit. What are the different parts of the Revit which conclude different things and which deals in different things. And then after we will move ahead to the building services explanation. Okay, some of you those who are not aware of that, like completely beginner in this. Okay, तो जिनको आइडिया है अच्छी बात है, जिनको नहीं है कोई बात नहीं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग. Then we will talk about the importance of this software, ki what is the importance and what is the key role of the Revit MEP software into the industry. Then we will talk about the little bit history and overview like that. Okay, then we will talk about the features of the software, and then the last one will be the job and scope. Okay, so let's start today's session. Okay, before moving ahead, I have a question from all of you. So आप में से कौन कौन रेविट के बारे में अवेयर है? लेट मी नो जस्ट वन बाय वन. सब लोग एक एक करके आंसर दें. जिसको भी पता है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं इनटू द चैट सेक्शन. और यू कैन रेज योर हैंड. ओके, सो एक एक करके लेंगे. सबसे पहले सबसे पहले शफ़ी वाइजल, प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट. It is a BIM software. ओके, इट्स अ बीम सॉफ्टवेयर. BIM software, sir. हम्म. This is a very now it's very easily you can make edit drawings and everything and calculations. That ओके. was that. आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है. आई गेस वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू मनोज लामा. यस मनोज लामा, प्लीज़. Yes, I think Revit is a BIM, one of the BIM software, यस. and I have used it maybe around 2-3 years ago. I used it as an architecture and that much only. MEP services, MEP part that I wasn't quite to use or like that. I'm just only asking about the Revit software, not the experience part. I'm just asking about what is Revit actually. Yeah, it's an BIM software. हाँ, या डेफिनेटली. यस मोहसिन. यस मोहसिन, प्लीज़ आप बताइए रेविट के बारे में. Yes, Revit software is a BIM software, which means building information, which is used for MEP services and also as a architecture. Before execution, we can see the 3D modelization, sir. If any clashes will be happen, we can see in minimize through software that Revit it is useful. ओके ओके ओके, Yes, थैंक sir. यू. ओके, थैंक यू मिस्टर मोहन. ठीक है. ओके, सभी यू कैन रेज योर हैंड्स डाउन. ओके, सो व्हाट इज़ द एक्चुअल आंसर? लेट अस सी कि व्हाट इज़ द रेविट सॉफ्टवेयर. ओके. Okay, so what is the Revit software? Revit is a completely a BIM software, as you told. मतलब जितना भी है सभी लोगों ने बताया. That is the Revit is a BIM, that is the Building Information Modeling software, which deals in the 3D modeling. Okay, 3D visualization, designing, documentation, analysis. Okay, this software deals in these all of things. You can see on this screen. Even with this software, we can generate the
a whole new design from the scratch. Okay, from the scratch we can design the whole building, okay, with the help of template and all that stuff, with the using of the 3D intelligent component. We are going to use the 3D intelligent component. And what is the 3D intelligent component? We will discuss that part later. Okay, so what is it standing here? That is the this software have that power to create a new design from the scratch, from the basic part, from the schematic design to the demolition of the project, which is all already covered into the Revit software. Okay, so basically from the scratch जो है पूरा जो है डिजाइनिंग करके आपको देगा, दैट इज द Revit. ओके, अब Revit यहाँ पे क्या ज़रूरी है, हम AutoCAD के ऊपर अभी तक क्यों नहीं काम कर रहे? दिस कैन बी अ मेन क्वेश्चन. ओके, एंड आई नो दैट Revit software has much capability than AutoCAD, and let me tell you why. Okay, so because I know आप सभी लोगों ने जो है Revit AutoCAD सॉफ्टवेयर किया हुआ है, एंड ऑल ऑफ यू कैन फेमिलियर विद दिस, दैट इज़ कि जो AutoCAD आपका है वो बस आपको खाली प्लानिंग करके देगा. दैट इज़ इट विल ओनली डू द प्लानिंग पार्ट. It will only help to, you know, cutting the sections and all that stuff, but you have to draw it. Okay, आपके पास पूरा डिजिटल स्पेस होता है. यू विद द हेल्प ऑफ कैड यू कैन जस्ट ड्रॉ दीज पार्ट्स, बट यू कांट डिज़ाइन, यू कांट एनालाइज, यू कांट स्केड्यूल इट. आप वो सब इसमें नहीं कर सकते. Revit हैज़ मच हायर बेटर ऑप्शंस देन अदर सॉफ्टवेयर्स. ओके, सो वट जो भी इसकी पावर है, जो भी इसकी कैपेबिलिटीज़ है, वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज BIM. ओके, तो अभी तक हमने एक चीज़ समझी कि Revit का एक BIM सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट इज द BIM? ओके, व्हाट इज द BIM? चलो आप लोगों से पूछते हैं पहले, तो मैं तो बता दूंगा बाद में दैट इज व्हाट इज द BIM, बट लेट मी नो फ्रॉम योर साइड. एक एक करके सभी रेज योर हैंड जिनको पता है. एक एक करके ज़रा मैं जानना चाहूँगा आप लोगों को जितना भी BIM के बारे में पता है, आइडिया है, व्हाट इज़ द BIM, यू कैन टेल मी. एनीबडी जिसको आइडिया है? यस, मोहसिन. Sir, it's building information which used for MEP services, sir, नहीं, like mechanical, electrical. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द MEP सर्विस, आई एम टॉकिंग अबाउट द BIM. ओके, व्हाट इज BIM एक्चुअली? क्योंकि Revit का जो कोर कॉन्सेप्ट है, Revit का जो मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज BIM. सो व्हाट इज Yes, BIM sir. एक्चुअली? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. यस, अमृत कुमार प्लीज. Yes, sir. BIM is a concept which is provide you to collaborate facility of the collaboration with different software, and by which you can collaborate all type of design like architectural, structural, and MEP models in single models, and you can what and you can schedule your project. You can quantify your project, and you can do many things by this facilities of the BIM. Now in market many software are working on the BIM like Civil 3D and Civil 3D Revit and Data, and ओके you can collaborate all this ओके software ओके 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 ओके, software फाइन 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 at फाइन. at in only one file. Okay, sir. Okay. Thank you so much. But it's not the correct answer. Okay. Let me tell you about what is BIM stands for actually. Okay, कि BIM बोलते किसको है and why is it important? We are going to discuss this thing as well. That is the BIM stands for the Building Information Modeling. It is a concept. Okay, it is a complete concept on which your physical structure, whatever you're going to execute into the real life, जो आप एग्जीक्यूट करेंगे उसका एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करके देगा. ठीक है, बेसिकली यू विद द हेल्प ऑफ BIM you are creating a design from the scratch, like it will contain the foundation, wall, doors, windows, ceiling, roof, HVAC, ducts, plumbing, piping, whatever it is. It will show whole building structure into the digital world, that how it will looks like, what are the errors, what are the complications, what will be the, you know, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको आइडेंटिफाई कौन करके देगा? BIM आइडेंटिफाई करके देगा. Okay, you can identify the clashes. Okay, so with the help of BIM you can design the whole building from the scratch, and it will take like
आप पूरा जो अगर आप BIM का वर्क फ्लो देखोगे, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कीमेटिक डिजाइन टू लाइक detail level like walls, doors, window we will add, then there will be piping and all that stuff. After designing that, you can also see that after demolishing that part, what are the phases. You can see the phases of the project. Okay, you can see the timeline of the project, you can manage it properly. We have the editing options with the help of Revit software. With the help of BIM, you can modify your project easily with the help of three intelligent component. Whatever you are seeing uh, into the software is completely part of the BIM. लाइक अगर आप उसमें डक्ट देखेंगे, उसमें आप पाइप देखेंगे, उसमें आप कोई प्लम्बिंग फिक्सर देखेंगे, उसमें आप कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट देखेंगे, पैनल, स्विचेस, वॉट एवर इट इज़, इट्स द पार्ट ऑफ BIM, that is building information modeling. Okay, I hope you have clear. That is, you can see that the technology building can design effectively and easily with creating any without creating any error during the execution of the project. Okay, so basically before executing any project, we have to see many challenges. Okay, because our AEC industry, that is the architectural engineering construction industry, is very complex. Okay, which is the next part, that is the importance of BIM into the AEC industry. Because आप जो बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो भी आप एग्जीक्यूट करेंगे, इट शुड बी मच बेटर. Okay, it should be more accurate, it should be more reliable, it should be cost effective, it should be it should have the quality. Okay, quality होनी चाहिए उसमें, and it should बैलेंस ऑल द एनर्जी. लाइक जो बिल्डिंग को रिक्वायर्ड होता है, लाइक आप जो बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाले हैं, इट शुड बी मच बेटर एंड बेटर वर्जन इन ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग फेज. तो हमारे पास ऐसा एक टूल होना चाहिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो इन सबको देख सके. लाइक अगर हमें क्वांटिटीज़ निकालनी है, हमें अगर स्केड्यूलिंग करनी है, हमें उसका डिज़ाइनिंग देखना है, हमें उसका एनालिसिस करना है, सो वी हैव टू सी दीज पार्ट्स. बिकॉज हमारी जो AEC इंडस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज देयर आर डिफरेंट फील्ड्स. वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि एक पर्सन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कभी नहीं होता. एवरीबडी नोज दिस थिंग हु आर वर्किंग इन टू द AEC इंडस्ट्री. सबको पता है कि एक पर्सन से कभी भी इंडस्ट्री नहीं चलती. बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, एक्सटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो. वी नीड टू वर्क कोलैबोरेटिवली. Okay. So that's why BIM comes into the picture, and BIM provides you the whole collaborative part. The main power of the BIM is to collaborate with each other. Okay, you can understand this thing, because AEC industry need the collaboration work. Without collaboration you can't execute any project. अगर मान लीजिए there is a collision between like architecture and engineer in other different engineers like electrical and plumbing, so the work will not progress. Project will stuck on that time. Project कभी execute नहीं होगा, रुक जाएगा, and the project cost very much high price. Okay, अब सबको पता है लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, and day by day, time to time, inflation is also increasing and the material cost is also increasing time to time. So we have to manage that budget and the time as well. So with the help of BIM, we can also manage our project easily. Like what will be the design phase, like I know I'm not talking about the Revit here only, I'm talking about the whole BIM concept. Okay, maybe it will be Navisworks, maybe it will be Civil 3D, maybe it will be ETABS. These softwares are helping our AEC industry to grow to the next level. Okay, so if I hear a line, so if I show a line here, that here comes the BIM, building information modeling, which not only improve the building design but it also solve the challenges if we face during the execution of project into the practical world. AEC industry needs BIM. It can solve the problems. Because of the BIM, many of the projects, like in Dubai, like in UAE, like in UK, United Kingdom, USA, whatever it is we are going to talk about, whether it's India as well. So we need a technology which can solve all these things. Okay,
So BIM, if I talk about today's session's agenda, it's not going to focus on the Revit MEP, but it is also going to focus on the BIM, because the Revit software is directly connected, or we can say Revit software is just like a BIM. Okay, it based on the concept, it work on the concept of the BIM. Okay, so that's the power of the BIM, that's the power of the Revit software. Okay, I hope you understand all these things. Okay, because as I told you, technology is going faster and then faster, new technology is coming into the picture, even artificial intelligence is going day by day. So we need, because in future we can see COVID came recently and everyone was working from their homes. Okay, and when they are working from the home, they realize that from the home we can also design our building, through which, from the cloud computing part. Okay, that's the work sharing concept I am talking about, that the collaboration part which provide from the Revit software. Okay, on the basis of that, there are many positions and there are many jobs which are going to talk about in the later session. हम बात करेंगे इस बारे में कि हमारा जो BIM सॉफ्टवेयर है, सॉरी जो BIM है बेसिकली, उसके पास इतनी पावर है कि वो सबको कोलैबोरेट कर सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड हमने देखा है कि किस प्रकार से लोग घर से काम कर रहे थे. सो इन फ्यूचर आप आगे जाके यही चीज़ देखेंगे, हमारी AEC इंडस्ट्रीज वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड the importance of the BIM into the AEC industry. Okay, I hope you have clear all the things. Okay, now let's move on to the next part. So after this we are going to talk about the sub parts of the Revit software. Okay, we know the Revit, but there are different fields in Revit. Okay, which deals in different different fields, like Revit architecture is there, Revit structure is there, Revit MEP is there. Okay, so let's understand this sub part. So सबसे पहले तो हम बात करते हैं, like first of all we will talk about the Revit architecture, sorry. So Revit architecture deals in the architecture part mostly, like walls, doors, windows, ceiling, and staircase and all that stuff, जो बेसिकली डिज़ाइनिंग में ज़्यादा डील करता है, जो बेसिकली आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में ज़्यादा डील करता है, विच इज़ द रेविट आर्किटेक्चर पार्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द रेविट स्ट्रक्चर विच डील्स इन द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, लाइक बिल्डिंग्स कोर पार्ट इज स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लाइक बीम, कॉलम, स्लैब एंड staircase, whatever it is, foundation. So basically structure part is very core part which comes into the picture. And now last but not the least, the main part of the software, that is the Revit MEP. Okay, now let's talk about what MEP stands for and what is MEP. Okay, so Revit MEP is a BIM software which deals in, first of all, mechanical, second one is electrical, third one is plumbing. Okay, these are the main three pillars of the Revit MEP. Okay, basically MEP stands for the mechanical, electrical and plumbing. MEP, where M stands for mechanical, that is the HVAC part, E stands for the electrical part, and P stands for the plumbing part, which are going to talk about into the building services part. Okay, so ये जो है पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है, ये डील किस में करता है, बेसिकली प्लानिंग में. ओके, सेक्शन, एलिवेशन, डिज़ाइनिंग, कैलकुलेशन एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, सो जो भी आपका MEP का जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो Revit MEP देखता है, इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन. क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को डाउट हो सकता है कि लाइक क्या ये एशरी स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरेगा कि नहीं, क्या इसमें IPC कोड होगा कि नहीं, क्या इसमें NFPA कोड होगा कि नहीं. तो देर आर ऑलरेडी कोड्स मेंशन इन दिस सॉफ्टवेयर, you don't need to get the code differently or all that stuff you have to do. Okay, during the designing in even into the last session, I let me show you the last project. तो आई गेस जिन्होंने लास्ट जो है Revit MEP की क्लास अटेंड करी होगी उन्होंने ये पार्ट पक्का देखा होगा. सो लेट मी शो यू ए लिटिल बिट ओवरव्यू अबाउट द सॉफ्टवेयर, हाउ इट्स लुक्स लाइक. तो दिस इज़ द होल बिल्डिंग डिज़ाइन. Okay, I know some of you are familiar with this. Okay, so this is the Google Office. This is the last project which we have discussed into the last sessions of the Revit MEP last batch. So this is the complete HVAC, you can see, and you can see here also there is a plumbing part we have done, including with the rainwater pipe and drainage system as well. With the help of that we have also designed the fire pumping room,
and electrical room as well. And here is our AHU and VAV, sorry, chiller and AHU system, and we have also the piping routing. Okay, so this is the main overview part. This is how the Revit MEP part looks like. Okay, just for for the idea that how we are going to work on the whole system. Even I can show you the planning part as well. So let's come to the sheet work as well. Even I can show you the calculations. Like this is the HVAC zone schedule. You can see that how what are the CFMs and lighting fixture schedule as well. And they are electrical bus schedule. Let me show you. And this is the panel schedule. You can see that. Okay, there are the analytical reports. Let me show you that part. Okay, so this is the analysis. Okay, and let me show you the load report. So let me show you the load report as well. So this is the load report of the HV system which we have designed. Okay, so you can see like CFM, VV, zone summary and all that stuff. So we can design and we can do whole part, like जो completely जो हमारा designing part है वो हम इसमें देख सकते हैं. Now let's come to the layout part. This is the layout system. You can see this is the Google Signature Tower, ptscadexpert, and this is like the HVAC system we have designed with the color grading. You can see which represent different CFMs like given here. Okay, and I can also show you the plumbing part as well. Okay, this is the plumbing layout with ducts are visible, so you can ignore this part. So here are some section part as well which is provided here. So you can see, you can get the idea, whole idea कि कैसे जो है हम पूरा जो है MEP systems design कर सकते हैं. So do you have a query from your side after seeing this? कुछ है सवाल आपके, अगर आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. Okay, so we have discussed about the Revit MEP. Now let's talk about the building services, which is very important. Okay, so some of you are familiar, some of you are not familiar. For those जिनको idea नहीं है building services क्या होता है, so building services are the type of systems or type of installation we can say that deals which ensure that to maintain the temperature of the building, to have proper supply of electricity and water supply, to give the proper जो हमारा सीवेज है उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के लिए वे देना, एंड वॉट एवर इट इज़ लाइक फायर फाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाना इज़ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज. यू कैन से इनडायरेक्टली इट इज़ MEP. Okay, building services or MEP, we can say it's both. Okay, so there are all other services as well, like there is an lift service as well, you can say, and all the other different kind of services which we can say, but main three are these things. Okay, so here is the hierarchy of the building services. So क्या क्या चीज़ें हैं, let me show you. Okay, so let's come to this part. So this is the building services which is divided into 4 main parts I have designed. I know it will be 3, like कि plumbing को भी include करना चाहिए था, I know, but you can say that this part is different. Okay, so I have divided into these 3-4 parts, and first of all this is mechanical have 2 main parts, that is HVAC and लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स. अब इस पार्ट के लिए आपके पास एक डिफरेंट जो है मैनेजमेंट टीम रहती है, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द HVAC पार्ट. ओके, सो दिस पार्ट कंटेन्स 3 मेन थिंग्स, दैट इज़ द सप्लाई एयर सिस्टम, रिटर्न एयर सिस्टम एंड एग्जॉस्ट एयर सिस्टम. ओके, सो सप्लाई एयर सिस्टम में आपके पास क्या होता है, दैट इज़ विच सप्लाई द एयर टू द जो भी आपका HVAC वाला पार्ट है, विच सप्लाई द एयर. ओके, बेसिकली चाहे वो कूल एयर हो, वार्म एयर हो, वो प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, बेसिकली सप्लाई एयर सिस्टम का. बेसिकली ये आपका AHU के साथ कनेक्ट रहता है और वही सप्लाई करके बेचेगा. देन नेक्स्ट कम टू दिस पार्ट, दिस इज़ द रिटर्न एयर सिस्टम विच डील्स इन द बेसिकली टू सक द एयर विच इज़ लाइक जो सप्लाई हुई है, लाइक अगर कोई डर्ट एयर है उसको क्लीन करना है वापस से, तो इट विल सक द एयर and through the AHU then it will filter and जो भी उसमें जर्म्स अगर उसको रिमूव करके वापस से कूल करके like cool or warm जो भी है according to the temperature of the outside of the building, whatever the environment is, according to that it will clean the it will send to the AHU. That is the return air system. Now next come to the exhaust air system. It helps to remove the
एक्स्ट्रा एयर और द जो भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये रिमूव करता है। ये मोस्टली आपका लगता है बेसिकली जहाँ पे चाहे आपका किचन हो या फिर आपका जो जहाँ पे आपके बाथरूम वगैरह हो, मोस्टली वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली द बिल्डिंग सर्विसेज। ओके okay, now next come to the next part, that is the electrical, which contains our which is based on the effective lighting designing. okay, अब मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है इसमें हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग के ऊपर, नॉट लाइक इन द केस इन द परस्पेक्टिव ऑफ जो आप रेंडरिंग्स वगैरह मोस्टली निकालते हैं या मोस्टली जो लाइटिंग इफेक्ट्स देते हैं उसके रिगार्डिंग नहीं। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे लाइक इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशंस। ओके, इसमें दो चीज़ें कंटेन होती हैं, हम दो सिस्टम पे मोस्टली फोकस करते हैं, दैट इज़ द लाइटिंग सिस्टम एंड अदर वन इज़ पावर सिस्टम। ओके, लाइटिंग सिस्टम में फोकस करते हैं लाइक स्विचेस। ओके, फर्स्ट वन इज स्विचेस एंड फिर then comes to lighting fixture, whatever lighting fixture you are providing, then conduit and then cable tray. Okay, this thing parts in comes into the lighting system. Power system contains mostly the power like a panel and maybe it will be like transformer or maybe it will be like MCB, whatever it is regarding to the power system, it contains the power basically. Okay, now next come to the main part, that is the plumbing, which is the third hierarchy into the building services, which contains four parts. Okay, so first one is water supply, which supply the water, basically water supply system, we can say it's a cold water supply, simple as that. Next come to the hot water system, basically if some people needs the hot water like geyser and all that stuff, so we have to provide that part into the building services as well. Then next come to the sanitary. Okay, so in the daily life we use the हम सभी जो है पानी का यूज़ करते ही हैं, बट ऑल्सो आवर बिल्डिंग जनरेट द वेस्ट एट द सेम टाइम, लाइक जो टॉयलेट वेस्ट हो गया लाइक ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, वॉट एवर वाटर टाइप इट इज़, वी हैव टू प्रोवाइड अ सेपरेट वे। ओके, लाइक जो आपका ब्लैक वाटर है वो कहाँ डिस्पोज ऑफ होगा, ग्रे वाटर कहाँ डिस्पोज ऑफ होगा, उसके लिए कहाँ से वे देना है, वो सब चीज़ें। सो उसके लिए हम यहाँ पे जो है सैनिटरी सिस्टम जो है प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जो बेसिकली एज यू नो इफ़ यू आर फेमिलियर विद लाइक जो मोस्टली हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें मोस्टली फ्लैट रूफ होता है। हाँ, स्लोप उसमें प्रोवाइड करवाते हैं लाइक उसके हिसाब से, एंड वी हैव टू प्रोवाइड द ड्रेनेज पाइप एज वेल सो दैट इट कैन गिव अ वे थ्रू डैट जो है बाकी जो वाटर है लाइक रेन वाटर जो है वो डिस्पोज ऑफ अस, ओके, थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम। ओके, सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइड दैट पार्ट एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द फायर प्रोटेक्शन सिस्टम विच प्रिवेंट्स द लाइक कोई भी अनहोनी हो सकती है, लाइक कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, बुरा वक्त का कुछ नहीं पता, सो फॉर दैट वी हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड दिस पार्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द building services. Okay, so I hope this part is clear to you. Okay, in which service do pump room is design goes to? Plumbing part. Plumbing, it depends which pumping room you are talking about. If you are talking about the water supply, then it will come into the plumbing part, and same as if you are designing the fire pump room, then it will continue. Yeah, water supply it will be for into the plumbing part. Okay, so now let's move ahead. Now let's discuss the next thing, that is the importance of the software. Okay, so we have discussed the services, we have discussed about the importance of the BIM. Okay, तो इम्पोर्टेंस के बारे में जो हमने बात की है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि रेविट MEP की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस बन जाती है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वी हैव टू डिज़ाइन अ बेटर बिल्डिंग, क्योंकि वही चीज़ सेम चीज़ वही यहीं पर ही रिपीट होने वाली है जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ कि आप सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं वो सभी सीखने के लिए आए हैं, तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस यहीं पर ही क्लियर हो जाती है और इंटेंशन भी यहीं पर ही क्लियर हो जाता है, दैट इज़ you want to learn this software to get into the industry. Most of the students even are not familiar with this with regarding to the हमारा जो MEP जो फील्ड है उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, और इवन दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी एज वेल। तो एक बात हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है, अब तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इससे हमें ये पता लग जाता है कि व्हाट BIM कैन डू, व्हाट Revit MEP सॉफ्टवेयर कैन डू. So directly or indirectly, it is creating jobs, it is creating demand.
ओके, इंपॉर्टेंस यहीं पर क्रिएट हो जाता है क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे सीखने ही इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली इट्स डिमांड इनटू द इंडस्ट्री, लोग यही पूछ रहे हैं कि आप सीख के आइए, सीखिए, तो इंपॉर्टेंस यहीं पर ही बन जाती है। Because as I told you during this session, that is BIM is very important to the industry, Revit MEP is important to the industry, that's why we need a software which can handle all these things, so कि एक person से build project कभी handle नहीं होता, so that's why Revit MEP is very important, because it also increase your skills एज वेल। जैसे जैसे अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ऐसे आपको अपने स्किल को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड इफ़ यू अपग्रेड योर सेल्फ यू कैन ईजिली गेट अ जॉब। Okay, so we are also going to talk about that what are the job positions, what are the position you can get through the Revit MEP software. Okay, so now let's talk about the history as well little bit। हम थोड़ा सा वो जो है हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है बताने के लिए। पहले तो जो है इनिशियली इसको PTC यानी कि पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने बनाया था। ओके, एंड इट वाज फाउंडेड बाय चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर नेम, इस नेम से इसको फाउंड किया गया था इनटू द ईयर ऑफ 1997। ओके, एंड इसको बाद में रेविट सॉफ्टवेयर के नेम के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया इन ईयर 2000 ईयर के अंदर। फिर आफ्टर दैट ऑटोडेस्क ने इसको परचेज कर लिया 2002 में, 2005 में इसका स्ट्रक्चर पार्ट इंक्लूड हुआ, फिर 2006 में रेविट MEP को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। Okay, this is the basic and overview part of the software. Okay, now let's talk about the features of the software, why this software is so demand, आखिर इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, what are the features of the software, let's talk about it first. Let us first of all integrate design, the first thing first, that is integrate design. Second one is 3D modeling and designing. Okay, आप सभी लोग AutoCAD में डिज़ाइनिंग कौन कौन कर चुका है, let me know। आप में से डिज़ाइनिंग किस किस ने किया AutoCAD के अंदर, anybody? AutoCAD में डिज़ाइनिंग लाइक कंप्लीट 3D मॉडलिंग एंड ऑल दैट सर। यस, इस्माइल कादरी, ओके, कुमार विकास, यस। ओके, सो आप लोग इस चीज़ से तो एग्री करेंगे, आई गेस आप लोग सभी एग्री करेंगे, दैट इज़ कि AutoCAD के अंदर जो डिज़ाइनिंग का पार्ट आता है, 3D मॉडलिंग का पार्ट आता है, वो टफ़ है। कितने लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से? टफ़ है, मतलब थोड़ा सा जो है टिपिकल हम कह सकते हैं। ओके, यस इस्माइल प्लीज़। Sir, it's tough, sir. It's tough, yeah. So basically, AutoCAD don't give much free hand to the 3D designing. It is, yeah, we can say and we can agree that AutoCAD planning में बहुत अच्छा है. AutoCAD is better in planning. AutoCAD is better in for creating the section and elevation, angle of projection, whatever it is we are going to talk about. But the main thing is when it comes to designing, when it comes to complete design, like to see each and every part of the whatever system we are talking about, like it is HVAC, it is plumbing, it is electrical, it is firefighting, we have to work on each and every part. तो आप बार बार में उसको डिज़ाइन करेंगे. वी हैव टू डिफाइन द रेडियस, वी हैव टू डिफाइन दिस, यू हैव टू डिफाइन दैट. what if there is an option directly to create a pipe? What if there is a direct option to create a duct? What if there is a direct option that we can that we have an VAV, we can just apply, and through that we can do the duct system designing. So through that part we can design the building from in a very much better way. तो बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली ये चीज़ें मिल रही हैं, अगर ये डायरेक्टली चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो वाई यू शुड नॉट लर्न दिस सॉफ्टवेयर? तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता. बेसिकली कहने का मतलब ये है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ द रेविट. ओके, सो 3D इंटेलिजेंट कंपोनेंट ये आपको प्रोवाइड करवाता है. बेसिकली द पैरामेट्रिक मॉडलिंग यू कैन डू दिस थिंग एज वेल. एनालिसिस, कोलैबोरेशन, एज आई टेल यू, कोलैबोरेशन ये आपको प्रोवाइड करवाता है. डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वॉक थ्रू लाइक ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक जो आप वो लोग वीडियोस देखते होंगे कई बार, लाइक जो कंपनी आपको वीडियोस दिखाती है लाइक डिजिटल वे में, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे HVAC से लगा हुआ है, ये देखिए हमारा पंप रूम ऐसे दिखेगा, इस टाइप से वहाँ पे जो है वेल्स वगैरह लगे हुए होंगे.
वो सब सारी चीज़ें हम वॉक थ्रू इसमें क्रिएट कर सकते हैं इन वेरी इजी वे। ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट दैट इज़ द पैरामेट्रिक मॉडलिंग। आई गेस इन द लास्ट जो है हमने बात की थी पैरामेट्रिक मॉडलिंग के बारे में। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, बट at the end we have created that part. Okay, so you can work even after doing the practice. You can design your own VAVs, you can design your own EHUs, you can design your own uh, panels, you can design your own FCUs, whatever the requirement of the industry, you can design it, including the CFM कैपेसिटी ऑफ दैट पार्ट। लाइक अगर मान लीजिए अगर आप VAV डिज़ाइन कर रहे हैं तो कितना CFM उसमें से पास थ्रू करवाना है वो भी आप बता सकते हो इसके अंदर। साथ ही साथ आपको एयर टर्मिनल भी आपको डिज़ाइन करने को मिलेगा उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें आप किस में बेसिकली आप रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द रेविट सॉफ्टवेयर। ओके, now let's move on to the job part. Okay, there is a many questions regarding to this. I guess आप सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया ज़रूर होगा कि what are the job positions. Okay, if you see the top main parts, okay, top जो है आपको positions दिख रही होंगी, इन पे तो आपकी जॉब लग ही सकती है। इसके साथ साथ BIM coordinator, project manager, construction manager, Revit MEP engineer, BIM engineer, BIM manager, BIM modeler, इनके बेसिस पे भी आप जॉब लग सकते हैं विद मच बेटर हायर सैलरी। जो भी आप एज अ डिज़ाइनिंग के पर्पज से ले रहे होंगे या फिर एज एन साइट इंजीनियर के तौर पे वर्क कर रहे होंगे, यू कैन गेट ऑल्सो गेट दीज पोजिशन एज वेल, बिकॉज आप में से कुछ लोग बिम कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं आगे। तो विद द हेल्प ऑफ रेविट MEP यू कैन कोऑर्डिनेट विद अदर पीपल एज वेल, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन द सिंगल मेन पार्ट। लाइक अगर आप में से कुछ लोग HVAC पे भी काम कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप HVAC के ऊपर काम कर पाएंगे, इंक्लूडिंग विद द इलेक्ट्रिकल पार्ट एज वेल। प्लम्बिंग वाले भी साथ में होंगे, आपके आर्किटेक्चर वाले भी होंगे, स्ट्रक्चर वाले भी होंगे, तो आप उनके साथ कोलैबोरेटिवली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, with help of project manager you can manage your projects. With the help of Revit you can become the BIM manager. Okay, through that जो भी like work sharing का जो part होता है उसमें भी आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं। So that is the power of the Revit MEP. ओके, दीज आर द जॉब पोजीशन। और सैलरी मान के चलिए आपका काफ़ी मच बेटर हायर होगा, अबाउट 25 to 30 आप मान के चलिए, 30 से 40 के ऊपर तो मान के चलिए आप। ओके, अप टू 40 और 45 इन द केस ऑफ दीज पोजीशंस। अगर मैं बात करूं, अगर आप नॉर्मल बेसिस पे जा रहे हैं, अगर आप खाली ड्राफ्टिंग सीख के जा रहे हैं तो 15 से 20-25 हज़ार तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी सैलरी। बट इन द केस ऑफ अगर आप कंप्लीट BIM के बेसिस पे जाते हैं, कंप्लीट डिज़ाइनिंग के बेसिस पे जाते हैं एज एन BIM इंजीनियर, BIM मैनेजर, देन यू कैन गेट अ मच बेटर हाई सैलरी। और आई गेस अगर मैं दुबई वगैरह इन सब की कंट्रीज़ की बात करूँ तो आई गेस 8000 एमिराट्स कुछ मिलता है, मेरे को अब करेंसी ध्यान नहीं कर। बेसिकली आपको एक अच्छा खासा पे अमाउंट मिल जाएगा। ओके, अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो लाखों में सैलरी चली जाती है कई बार तो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। एंड यहाँ पे आपको पोजिशनिंग जो है वो समझ में आ गई होगी कि किस बेसिस पे आप रेविट MEP के बेसिस पे आप कहाँ कौन से पोजीशन पे, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत से लोगों को नहीं होती है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द रेविट MEP सॉफ्टवेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके, सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, दिस इज आवर करंट इंटरफेस। ओके, स्टार्ट आप कहाँ से कर सकते हैं? फिलहाल मेरे पास 2 वर्जन है रेविट के, दैट इज रेविट 2022 एंड रेविट 2023। देयर आर 2 वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से फ़िलहाल के लिए मैं आपको 2023 पे ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो हमारा आगे आने वाले कंप्लीट सेशंस हैं उसमें हम 2023 में पढ़ाएंगे। और जो हमारा मेन जो पार्ट रहेगा दैट इज़ द, तो शॉपिंग मॉल पे ऊपर हमारा जो है प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, सो व्हाट अबाउट फ्रेशर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेशर के लिए आपको अगर आप एज अ डिज़ाइनिंग पर्पज़ या फिर एज अ ड्राफ्टिंग पर्पज़ सीख के जाएंगे तो आपको ज़्यादा मच बेटर तो नहीं मिलेगा, मतलब लाइक 20 to 25,000 as a fresher if you are going to as a draftsman or like Revit MEP draftsman. But if you are going to as a BIM manager or BIM like up to that, तो आप 30 अबव या 35 अबव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी मच हायर पोजीशन और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी उसके होती है उसके अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। तो ये था आपका कंप्लीट अबाउट द Revit MEP whole theoretical overview. So on Monday
On the Monday we will talk about the interface of the Revit software. Okay, what is the interface like, which tool is about what, and templates के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम चूज़ करेंगे कि कौन सी चीज़ के ऊपर काम करना है. तो उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड to our topics. Okay, so that's all from my side. If you have any queries, you can ask me right now. Thank you so much for joining the class. Have a great day, and you can leave now. जिनकी queries रह गई हैं वो पूछ सकते हैं, otherwise बाकी सब leave कर सकते हैं. Thank you so much. Now let's take some doubts, like what are the prerequisites required to grab the position. Okay, so you need to Revit MEP का ही मेन रहेगा. बेसिकली आपको BIM के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट. You need complete knowledge about the BIM, BIM execution plan, levels, LOD, like all that basic जो पार्ट होता है, BIM मेच्योरिटी लेवल किसको बोलते हैं, उन सब के बारे में, BIM ओवरऑल BIM के बारे में. मतलब BIM में BIM कोई छोटी चीज़ नहीं है. अभी जो हमने BIM के बारे में जितना डिस्कस किया है ना, इट इज़ वेरी शॉर्ट. BIM बहुत बड़ी चीज़ है. BIM इज़ अ वेरी बिग थिंग. और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, दैट इज़ द like different like BIM execution plan. If I talk about कि BIM के अंदर, BIM के अंदर प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि अभी जो हमने डिस्कस किया है वो तो बस ये किया है कि BIM में हम काम क्या करेंगे, लेकिन काम कैसे करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सबके वहाँ पर रोल्स डिफाइन करने होते हैं, सबके वहाँ पे पोजीशंस बतानी होती है, सबका रोल बताना पड़ता है कि किसका क्या रोल है, वरना अदरवाइज स्टेक होल्डर्स आपस में झगड़ने लगेंगे. ठीक है. ओके, बिकॉज दैट्स वाई व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट. देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको बताऊं तो आपको शायद एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड. रिक्वायरमेंट तो ओके, लेट मी सी दैट पार्ट. एक बार मुझे को थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूं तो मुझे जितना ध्यान है, दैट इज़ आपको 4 GB तो रैम चाहिए मिनिमम, एंड i5 या Ryzen 5 प्रोसेसर चाहिए उसको चलाने के लिए, एंड 2 to 4 GB ग्राफिक कार्ड. इतना रिक्वायरमेंट होता है, पर वो मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट है. ठीक है सर. यू विल, हाँ, या आई विल प्रोवाइड द फाइल वेरी सून. when we will start the class, then we will provide the file link into the chat box, so through that you can download and start working on it. Okay, so और सर हेलो. हाँ जी, यस. सर फाइल जो भेजिएगा सर लोअर वर्जन में भेजिएगा, हम लोग के पास सर 21 वर्जन ही है. कोई बात नहीं, मैं आपको IFC फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा. ओके, IFC फाइल इज ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. आई होप यू हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर टुडे, एंड इन मंडे सेशन हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटरफेस ऑफ द Revit एंड द टेम्पलेट्स फॉर द Revit. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. यू कैन ऑल लीव नाउ. सो फॉर टुडे, गुड नाइट एंड टेक केयर. थैंक यू. आप सब लीव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. हैव अ ग्रेट डे.